Hi guys, this is Dr. Sowmyashree Mishra, aka Dr. Puzzler, as you might know her on Instagram. She recently cleared her NEET PG exam and got a seat in MS General Surgery. One question is, what factors were your priority while choosing your branch? Uh, See, about choosing a branch is totally it's your opinion. What you think about the branch? Uh, where you see yourself in future after 10 years or after 20 years? Where do you see yourself? Like the people, so, matlab, who think. We can't manage the emergency. We can't do the emergency all the time in my life. And the patient and this adrenaline rush. So they take radiology or dermatology for better work-life balance. And who like me, I'm a totally workaholic. Okay, I'm totally workaholic. I like to work at the hospital settings, like managing emergencies, like in OPDs. So I love to work. I love to manage the patient, whether it's medicine or surgery. But during intensive, I had a weakness towards medicine. But after a time, I realized that to weakness towards neuroscience and neurosurgery actually. I was going to neurosurgery OPD since fourth year, and during first year, neuroanatomy was my favorite. So gradually, I thought कि, after taking neurosurgery or general surgery, I will be happy doing this. So I chose general surgery for the next goal of my life. Then Nice. another thing I want to add कि मतलब कोई भी ब्रांच ऐसे बुरा नहीं होता है लाइक एवरी ब्रांच हैज देयर सिग्निफिकेंस at their place. Their individuality है उनका. So whether it's anatomy or it's surgery or pediatrics or dermatology, radio, it doesn't matter. What matters is how happy you are and how satisfied you are in your life in that branch. Okay, that matters when you come to choose the branch or the specialty you want you to be in. Question is, were you anytime confused regarding medical branches or surgical branches? Yes, I was. Uh, I think during internship you will get to know about it. Like uh, first you will be posted like in non-clinical or clinical. Like I was first posted in FMT. Okay, so I was like yeah अभी मेरे को CID बनना है and I will do autopsy and this thing. So I liked FMT that time during the 15 days of my first posting. So we went to the postmortem room. We did some postmortem. Have written some postmortem जो report होता है वो लिखे हैं वो मतलब देखे हैं तो even we have examined some victims and ओवरऑल एक आइडिया हो गया था एफएमडी के ऊपर एंड इट सीम टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वांटेड कि हाँ ठीक है एफएमडी बहुत अच्छा है एंड आई विल डू एफएम पीजी इन एफएमडी देन आई was again posted in psychiatry. Okay, I love psychiatry. And this confusion will stay with you along the journey in MBBS, in UG, okay? And this will continue. Like during medicine posting, I was like, Arey, this medicine just is love. सो आई थॉट कि मेडिसिन लेना है मेडिसिन लेने के बाद न्यूरो मेडिसिन करेंगे और कुछ भी आगे सोचना है मेडिसिन के पहले में मेरा सर्जरी हुआ था तो जनरल सर्जरी वाज गुड नॉट दैट बैड एक्सपीरियंस बट इट वाज गुड बट आफ्टर डूइंग मेडिसिन आई थॉट कि मेडिसिन करना है then after pediatrics, I love the children, so cute babies were there. Na. So I love them. And in Essensio and Niku, I got to learn so much, so many things there. I had a weakness towards pediatrics during the internship. But later on, what happens during your preparation time, you don't know what you will get into. Na? क्या होगा आगे कुछ नहीं पता होता है बस एग्जाम देते हैं उसके बाद जो रैंक आएगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा बट द थिंग हाँ. इज कि तुम्हें क्या चाहिए मतलब लाइक मुझे आफ्टर डूइंग एन इंटरवेंशन आई एम सेटिस्फाइड
like after something, so inside something or doing something, I will be satisfied, but not writing medicines like this. So I thought, and first, that neurosurgery thing is my objective from the starting. That's why I chose surgery during the PG, and I could get pediatrics and other branches also, um, other in better colleges, but I chose to be a surgeon in my life. So ये confusion होता रहता है. Acha. Yeah, I could totally relate to what you could say because we had our postings right now. So जब पहले ENT का postings था तो I was like ENT बहुत cool है तो I should हाँ, go into ENT. Then next after as you said I had pediatrics, so I thought pediatrics is much better. I should now choose that. So that yeah, dilemma is gone. And as you said, like I heard one more surgeon also say the same thing that सर्जरी में ना instant results मिलते हैं सर्जरी के तुरंत बाद you can see the result, you can see the patient like yes, recovering, yeah. unlike medicine which is a long term like as you said medicines लिख के देना पड़ता है and that follow up thing and all it goes on. Next question is when did you start your prep and what were the factors that you kept in mind before starting your preparation? I was doing the preparation along with my job. So I was like, I have to get out of this race, this PG entrance, and this race. So I have to do whatever I can, and I just have to pass out and go whatever the residency it is. I'm just focusing on my work, not ki on the branch, or the I have to go with this rank, or I have to get this mark and this. But I have a strategy कि मुझे इस बार कैसे भी करके निकालना है, जितना भी टाइम मिले, जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे इस बार निकालना है बस. And this was my first, and I gave myself, this is the last attempt, so do your 100%, whatever you can do, and go for it. Then I just made a strategy कि हाँ इतने इतने दिन में इतना खत्म करना है, but plan never work out. True that. वही. You said that you took a job, no, ma'am. So did it in any way help you, or you felt that you faced difficulty due to your job during your preparation? uh, yeah, that job, see, the thing I for the reason I joined at this district hospital is to be financially independent in my family. And the second thing, my mom told me that uh, पूरा टाइम घर पे तो बैठ के तुम कैसे पढ़ सकती हो, यू नीड सम रिफ्रेशमेंट ना. After reading for long 8 hours or 10 hours, you need some mind replacement. In that time, go to the hospital, do whatever the job you like to do, and learn something. You ऐसा नहीं है कि पूरा वेस्ट जाएगा, पूरा जो जॉब करोगे कुछ भी तो पूरा वेस्ट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू हैव टू talk with the patient. The repos will be, matlab, you will be experienced with the patient interactions, and clinical exposure is massive. In my hospital, I have posted the OPD cases series. Now you have seen that. Yeah, it was So really all of helpful. the cases are from the DHH, District Headquarter Hospital. Starting from the CVA, we are getting DK, and what OPD. On OPD basis, we are getting so much of like common cold, flu, etc. But sometimes what happens, interesting cases come. Dr. Epi says doing job gets you exposure, which is important in our profession. Yes, that's right. Clinical exposure and experience is very, very important. Yeah, I got to learn some new procedures and new cases also. Um, I think that brings you a curiosity inside you, and you come home and see the cases, and you that will be imprinted on your brain for lifetime. Okay, then you have a post now, the audio visual, like visual aids help more to remember things for long time. You have made a Yeah, post on it. yeah, true. Type of learners and yeah. Yeah. The next question was how to go about first reading and second time reading for NEET PG. Uh, which one should be reading only the important questions and which time reading should be detailed study approach? What?
I believe in excellence. Okay, matlab, I want to go through the deep. I want to know the exact detail of a thing, a detail of a topic. But in NEET PG or during any entrance examination, no detailing is needed. Like you don't have to do PhD in it, na. You have to go हाँ. through the previous year topics, previous year questions, what has come previously. I'm not telling you only questions karo, but you have to go through the topics previously asked in whether it needs PG or it's ends or INICT. Okay, and from that you will be getting more than 70 to 80% of the questions correct in the exam, in the real exam. So for that, according to me, the first rate should be slight detail, and second rate you should go through previous topics and the highlighted points you have marked during the first rate. It's very important. What I made was I was reading. I totally used Mero and no extra source and nothing else. So what I did was I was studying reading from the main Mero notes. So I was underlining it and highlighting the parts which has come in the last exam or previous exam or which I think to be important in the exam. And जो साइड में एक कलम रहता है ना मेरे नोट्स में हाँ, इम्पोर्टेंट हाँ. वहां पे कुछ कुछ लिख देते हैं मतलब पूरा पेज का जो है समरी जो है वो एक साइड में एक लिख देती हूँ और एक जो फ्लैश कार्ड लेके वहां पे चिपका देती हूँ हाँ इस पेज में ये टॉपिक्स और ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसको मेरे को जानना है ना एग्जाम में यही आने वाला है सो आई हैव अच्छा. एन आइडिया ड्यूरिंग द सेकेंड रीड कि हाँ इस पेज का इस टॉपिक का ये इम्पोर्टेंट है मेरे को इसके ऊपर आई हैव टू फोकस ऑन तो क्या होगा ना ड्यूरिंग द सेकेंड रीड यू विल गेट ए स्पीड टू रिवाइज मतलब फर्स्ट रीड जितना स्लो होगा सेकेंड रीड उससे थोड़ा स्पीड होगा मतलब फर्स्ट अगर 1.2x में गया तो सेकेंड रीड 1.5x में मस्त जाएगा अच्छा. Yeah, totally true. You made these flashcards during lectures or after watching the lectures? During preparation, I didn't watch much of lectures. I only followed the notes. During internship, I was the edition five almost, almost complete. Not all. I could not complete all the videos and all the notes and also all the modules. This was a question again asked, repeated 2 to 3 times. For a student starting preparation right now in second or third year, which subjects should be completed first? Okay, you are preparing from second year or third year. First of all, you should focus on professional exam, proper exams. Okay. First, during second year, third year, we have a base, na? So we have to complete all the textbooks first. Then now, क्या हो गया अभी मेरो आ गया प्रेप लेडर सेरेबेलम एकेडमी एंड व्हाट एवर डेम्स सो बच्चे क्या कर रहे हैं ना टेक्स्ट बुक कोई पढ़ नहीं रहा है यार हमारे टाइम में क्या था वी डिडंट हैव एनी ऑफ दिस वी हैव ओनली डेम्स during fourth year and starting of fourth year we got to know about Mero and it was lunch at that time so we took dams for in during the fourth year and first year second year third year we have studied whole textbook okay so टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद खुद का नोट्स बनाना उस नोट्स को पढ़ना इस टोटली इज वेरी वेरी गुड और प्रॉप एग्जाम में वही बहुत काम आता है और जो कंसेप्ट बिल्ड होता है उससे ना वो मेरे नोट से या इसी प्रेप लेटर के नोट्स के डेंस नोट्स नहीं हो पाता है आई नो कि दे आर गाइडेंस एंड द टीचर्स आर वेरी 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 गुड दे आर द लेजेंड्स देयर but after watching the video, after reading the note, you should go for the standard textbook so that you can build the concept first. Okay, then the preparation after or during the internship will be easier for you. So focus on the concept, not on the preparation or the MCQs only. That's my motto, and according to me, this is the best thing I could do during my UG things. Matlab, I was a good student. I was in the top five of my university exam and had a gold medal in physiology. So I focused कि मेरे को सब जानना है, concept अच्छे से पढ़ना है, and that will help you becoming a good doctor. हम एग्जाम के लिए कि कंपटीशन के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं ना हाँ. डॉक्टर बनना है पेशेंट को ट्रीट करना है उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं राइट सो
Hmm. Think about it and build the concept before preparing or before going to any competition. Okay, after once you build the concept that जो Rancho बोलता है in the Three Idiots. Okay, that Yeah. thing I want to What is say. the difference in the approach for reading for prof exams and for this competitive exams? No much Any different. major difference? No No much much difference. different. Like, Okay. see, only the difference is the pattern of the exams. Okay. You have to in prop exam for uni exams you have to write the long questions, short notes, short questions, and everything all. But what happens in MCQs or NEET PG exam? They check your depth of knowledge. Okay. कि ये क्वेश्चन है एक तो चार ऑप्शन होंगे. You have to choose between that four options, and दैट विल चेक कि कितना तुम जानते हो उस टॉपिक के बारे में. ये नहीं कि उसका डेफिनेशन याद है, इटियोलॉजी याद है, इसको प्रोफाइलेक्सिस, इसका पैथोजेनेसिस, ये सब नहीं हो. एक कीवर्ड पूछेंगे वो लोग, यू हैव टू rule out other options and tick for the correct one. Okay, that's the difference. And I think we should more during the prof मतलब third year, second year, fourth year में we should also focus on the MCQs along with along with the professional exam, the subjects, along with the long questions, we should focus on the MCQs. That will help later on during internship or after internship when you prepare. Dr. Pepi says competitive exams check your concepts and presence of mind. Exactly. That 3 hours of exams, 3.5, 3 hours of exams really matter. मतलब that time, whatever you have in mind, that actually determines the rank, the output of your hard work. Yes. How How many many? GTs have you given? They have asked. Um, I think seriously I had only given 10 to 11, but every ऐसे दे दिया था कुछ भी. And last 3 to 4 GTs I had a constant, what is it? The constant graph was there. Last 3 GTs. And did I you feel that GTs में आपका जो भी rank आता था, it was very close to your final rank in the NEET no PG? no No, it was much better rank than that. Your rank. rank is never means never compare the ranks. Okay, Okay. rather compare the numbers of correct and incorrect responses. Okay, that means I got correct responses in final exam 158 and 38 minus. During Merojit what I used to get is 148, 145, and the rank was like 12,000, 13,000. I have never crossed the 10 within 10,000 range में कभी नहीं रही हूँ. After 12, 13 ऐसे only one exam I got 2,000 rank. 2 या 3,000 रैंक था उसमें एक आईएनएसटी एग्जाम में. तो ऐसे लगा था मतलब कुछ रैंक तो कंसर्न है ही नहीं, बस जो क्वेश्चंस है वो ही इम्पोर्टेंट है. सो आई लेफ्ट. एक तो एंजाइटी था कि बाकी सब प्रिपेयर कर रहे हैं, सोल प्रिपेयर कर रहे हैं. आई वॉज नॉट गेटिंग एनफ टाइम. आई हैड एन एंजाइटी इनसाइड मी कि बाकी लोग को टाइम मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, इतना में मेरे को रैंक इतना खराब आ रहा है. तो आई थॉट कि चलो यार छोड़ते हैं इसको, बस अभी जितना है जितना कर पाएंगे. क्वेश्चंस हो गया, 5 मिनट क्रॉस करना है, 550 के अबव लाना है मार्क्स, उसके बाद आगे भगवान भरोसे. How did you deal with the dilemma of NEET PG postponement, delaying the counseling and all? आई नेवर कंसिडर्ड. I ignored all the messages, all the things, the notices are coming कि ये होने वाला है. People are telling in the Google also कि is coming. NEET PG will be postponed. The जो ABVP कांग्रेस वो प्रेसिडेंट गए हैं उनसे बात करने, it will be postponed till the day of the exam. The notifications are coming कि exam will be postponed. So just ignore this kind of things and हाँ stay away from social media. जितना हो सके दूर रहो उन सब लोगों से, और इन लोगों को दिमाग में घुसाना ही नहीं है. हाँ, अगर पोस्टपोन हुआ तो अच्छी बात है, यू हैव टाइम, यू विल गेट टाइम टू रिवाइज मोर, राइट. और अगर नहीं भी Right. हुआ तो तुम्हारा जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चल रहा है उस हिसाब से तुम करोगे ही अच्छे. उस हिसाब से इग्नोर ऑल द Did you थिंग्स. at any time prioritize your NEET PG preparation over your professional exams or the other way around?
No, I was neutral about the NEET PG preparation. आई हैड नो आइडिया कि हाँ हम नीट पीजी एग्जाम देने के लिए भी मतलब पीजी करने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है, उसमें 19 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा बोल के आई हैड टोटली नो आइडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. सो वट एवर आई एम गेटिंग ड्यूरिंग द ड्यूरिंग अ ईयर सेमिस्टर सब्जेक्ट्स, आई थिंक सब पढ़ना है हमको. लाइक ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एनाटॉमी फिजियो बायोकेमिस्ट्री वी आर गेटिंग कंप्लीटेड, उसमें पूरा अच्छे से पढ़ दो. एनाटोमी अच्छा करो, फिजियो अच्छा करो, बायोकेम अच्छा करो, तो लास्ट में वो तो अच्छा हो ही जाएगा ना जो भी होगा इन प्रिपरेशन. सो प्रेजेंट में रहो मेरे हिसाब से. This was very much needed because आजकल तो from first year only they start preparing for NEET PG and stuff. So नो नो, क्या करना है, इतना कंपटीशन क्यों भाई, थोड़ा लाइफ रेस से बाहर निकाल के देखो. यू एंजॉय, यू हैव एंटर्ड इनटू अ प्रोफेशन लाइक is noble profession in the world, right? We are doctors, and the second God people think about us. We have to study to save the patient lives, not to crack the NEET PG or anything like USMLE or club or something like that. Along with that, along with this profession, we'll be getting into any line like medicine ho, surgery ho, USMLE ho, plab ho. But the main motto of this profession is to treat the patient, right? Not to get a Nobel Prize. That's it. Along with that, it comes do you automatically. believe in studying everything and then giving GT or start giving GT and learn along? It depends. Um, ये क्या होता है कभी कभी कि अगर आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड और आई एम फीलिंग लो एंड नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, लाइक आई एम नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, सो क्या करते हैं, एक जीटी और मिनी टेस्ट होता है ना, तो आई हाँ. सिट फॉर ए जीटी और आई गिव मिनी टेस्ट. देन पता चलता है कि कितने पानी में हम हैं. द वीकेस्ट सब्जेक्ट वी गेट टू नो, अरे यार इसमें बहुत वीक है, अभी चलो इससे ही स्टार्ट करते हैं. सो आई डिड दैट ड्यूरिंग प्रिपरेशन. आई ऐसे सुबह उठती थी, बिना सुबह उठती थी, पहले उठने के बाद मेरे को निकाल के जो मिनी टेस्ट होगा वो कर देती थी. ठीक है, उसमें से पता चल जाएगा कितने पानी में मैं हूँ, एसपीएम नहीं हो रहा है कि ओजी नहीं हो रहा है कि पैथो नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से उसको उस टॉपिक से चूज करते हो, सब्जेक्ट पढ़ना है वो करना है. लाइक आई यूज टू get radiology questions very very bad. मतलब it was my weakest subject during mini test, grand test. So I started from radiology. Then Dharma, such subject I used to start earlier. After completed it, then I jumped into pathology, biochemistry, because biochemistry is very, very volatile. So you have to retain it for a long time for the exam. But Rebecca ma'am has made it so simple. I mean, it's just awesome. So biochemistry में ठीक हो गया पूरा. Radioderma is was good during the preparation, and but I had some weakness SPM and OG, but I couldn't do. क्या करें, टाइम कम था. There is also one question asked about next exam. Like if you know that now NEET PG is changed to next and our batch would be the first giving the next exam from December and it would replace the final year prof exams and that marks would be considered even for the PG seat allocation. So any tips you would like to give for that exam? I would like to ask you what you are feeling about this next exam. There's a lot of dilemma, ma'am. Like we don't even know if it's gonna happen in December or not. Like they said that our juniors would be the first batch to give, and now all of a sudden they said that we will be giving it in December. In 23, So right? yeah, 23 December. So can't say what they'll do till the last moment. But be prepared. And I don't think कुछ difference ज़्यादा होगा, because I totally very little idea about this. Because next में next one, next two will gonna be there ना. In next Ah, one, other thing is there. Next two, you have to for internship you will be giving next one, right? Before internship, and yeah, after before internship you will be giving next two. yeah. The pattern has not been released till.
No, it would be a 3 day long exam, is what they are saying, but not I sure. have to medicine and allied subject and surgery and allied subject Yeah, like this. No, ops and gynae is a different part, right? yeah. So we'll be getting like integrated thing, integrated approach. Like I said before, कि patho एक system ले लो, like respiratory system from anatomy, physiology, then comes the pathology, then comes medicine, then comes surgery. You have to integrate all this along with the system, and you have to study, and एग्जाम वही है और क्या, पेशेंट भी तो वही है। रेस्पी का एक केस आएगा तो यू कांट से कि ये पेथो का पार्ट है, ये मेडिसिन है, पेथ सर्जरी है बोल के, यू कांट से लाइक दैट ना। यू हैव टू नो द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, आफ्टर दैट यू हैव टू नो द फिजियोलॉजी। once you know the normal anatomy and physiology, you will get to know the what is the pathology and what is the disease and what may be the treatment for the patient, right? So I think it would be a vast change, going to be a great change. This ophthal is very volatile, so how did you approach it during your professional exams? Yes, Opthal, I used to like it. I loved ENT than Opthal. So Opthal was good till it comes to retina. Retina was really मतलब वो वाला थिंग याद नहीं रहता था। जितना भी पढ़ लो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि भूल जा रहे हैं बोल के। But I like the cataract thing and the glaucoma part, and also the infections like cornea. Cornea wala thing was my favorite, and that was I have studied from Rajaratna ma'am and neuro-ophthalmology. She had taught it like jam, matlab, it was great, and she made a concept like कि ophtha का जो है एक तो वेटेज है ना, वो उन्होंने बना दिया था पूरा। और उत्सव बंसल सर का जो सोच वाला जो बुक है, नो रिविजन टाइप का छोटा सा सोच बुक है, दिस वाज बेस्ट। बिफोर द एग्जाम एंड भाइवा आई यूज टू रीड फ्रॉम दैट बुक एंड गो टू द वाइवा रूम। ओके, ये वाला पूछेंगे। वो स्ट्राबिस्मस का था, उन्होंने बहुत अच्छे से चार्ट बना दिया था उसमें। स्ट्राबिस्मस और न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजी और इन्फेक्शंस पार्ट जो भी था, वायरल केराटाइटिस, ये वाला वो पार्ट बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा था उसमें। So that helped a lot during the prop exam. And during Viva, I got a case of cataract, long case of cataract and short case of pathological myopia. So when I entered the room, sir, the external sir asked me, what was the power of the specs? So I used to told him minus one point this and minus 1.75. So he asked me, what is the definition of pathological myopia? Then उसके बाद अंदर चलते गए, देन पैथोलॉजिकल मायोपिया से कब रेटिनल डिटेचमेंट पे आ गया, आई कुडंट नो कहाँ पहुंच गए अभी। मतलब पैथोलॉजिकल मायोपिया से सीधा रेटिनल डिटेचमेंट, एंड ही आस्क्ड मी व्हाट इज रेटिनल होल एंड व्हाट इज ये वाला थिंग। और जो मेरे पहले गया था उसको पूछे कि ओके, उस टाइम में लाइट चला गया, ओके इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, तो उनको पूछे कि ओके यू कैन सी इन द डार्क, सो ही सेड यस, सो टेल मी द रॉड वाला जो रॉड एंड कोन्स का जो रहता है ना, तो डार्क डार्क कितना मतलब Visual कैसे ये acuity. एडप्ट करता है जो, वो वाला पूछने लगे। उसके बाद ऑप्टिक्स में चले आए। सो ही आस्क्ड कि लाइट का वेलोसिटी कितना होता है एंड हाउ मच इज लाइट ईयर, ये वाला कितना है, तो थिंग मतलब पूरा ऑन रिलेटेड टू आई। ऑप्था से कुछ नहीं पूछे बट ऑप्टिक्स पूछते रहे, कनकेव कन्वेक्स ये वो, बहुत सारी चीजें ऐसे। एंड ड्यूरिंग लॉन्ग केस कैटरेक्ट क्या हुआ, एचओडी, हमारे जो एचओडी मैम है वो मेरा भाईवा ले रही थी। तो आई सेड एंड सी आस्क्ड, हाँ टेल मी व्हाट इज योर केस। आई टोल्ड एक्सप्लेन ऑल द थिंग पूरा डिटेल करके, पूरा जितना याद रखी थी पूरा बोल दी। उसके बाद मैम बोले कि ओके व्हाट वाज योर केस। मैम जस्ट आई एक्सप्लेन यू ना, इट वाज केस ऑफ कैटरेक्ट एंड दिस ओके, आई वाज नॉट लिसनिंग, अगेन एक्सप्लेन इट, और एक बार। Okay, I will explain. I explained her the long case for 3 times. फिर भी उनको लगा कि मैंने कुछ नहीं बोला है। And say, okay, okay, go. How did you remember all those IPC sections in FMT? Have written it on a paper and posted in the means in front of my table. And रोज उठ के उसको देखना है, एक एक याद रखना है बस, एक एक दिन में एक बार एक ठोई। उसमें याद देख देख के एक आ जाता है, विजुअल मेमोरी रह जाता है उसका।
क्लास कार्ड चिपकाई थी, ये वाला था वहां पे, ये करो, ये हो जाता है। I don't like to remember through the mnemonics things. I don't like. So it Okay. automatically I retain it in my brain. So it's okay. Okay, next question was there. Yes. Will PSM and FMT have the similar weightage as NEET in next? मतलब वो तो Actually, NMC बताया। according to the new pattern, PSM will have more weightage compared to NEET in the next exam, is what I have heard. अच्छा, रिलेटेड वाले साथ साथ याद कर लो। यस, लाइक कंसेंट वाला थिंग, वो वाला 3 4 ठो रहता है, 7 ईयर, लेस देन 7 ईयर, 12 ईयर, वो वाला कंसेंट वाला आईपीसी एक जगह, और एक 44 45 जो रहता है लाइफ डेथ इंजरी वाला, और एक मर्डर 302 दफा लगता है जो, हाँ, उसमें बहुत सारा है। ठीक है, उसके बाद जो 304 ए बी जो है उसमें ए फॉर एप्रॉन, ओके याद रखना, ए फॉर एप्रॉन वाइट डॉक्टर, तो नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए वो है, और एक डाउरी के लिए। नेक्स्ट इज डाउरी जो, अच्छा। और एक रहता है प्रेगनेंसी रिलेटेड एमडीपी के ऊपर, और एक गाइड है ये, वो वाला याद रख लेना। बाकी परज्यूरी जो नए रूल ऑफ थ्री जो रहता है 92 192 93 जो रहता है वो वाला एक, इतना इम्पोर्टेंट है। The first and second year subjects, did you read again before giving NEET PG? और जिसने अपने नोट्स बनाया था सिर्फ उसे ही रिवाइज किया या फिर से पढ़ा आपने मैम्स? No, I had to study from for anatomy, like anatomy थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस आता है, मतलब लाइक हम जो BD 84 में पढ़ते हैं उससे बहुत थोड़ा डिफरेंट रहता है एमसीक्यूज में। So I had to study from Mero notes, and I also did from physio also from the Mero. So it was you have to study because फास्ट ईयर का इंटर्नशिप के बाद कुछ याद नहीं रहता है, बस इतना याद रहेगा कि हाँ ये वाला ये यहाँ पे है, लेकिन मसल का ओरिजिन इंसर्शन याद नहीं रहता है। यू कांट रिटेन इट टिल 6 ईयर। इफ यू कैन देन यू आर जीनियस एंड आई से आउट द वर्ल्ड। आफ्टर फर्स्ट ईयर एग्जाम्स ओनली हाफ ऑफ द मसल अटैचमेंट इंसर्शन सब चला गया है दिमाग से। चला जाता है। इट्स नॉर्मल। अभी तो बेनेडिक्ट टेस्ट भी पूछेंगे तो हाँ एक शुगर में करते हैं कि क्या होता है, लेकिन डिटेल याद नहीं रहता है। ट्रू। आई थिंक दैट्स इट। That's it. Yeah, that's it. एनीवन एल्स is having any questions? How did you revise PSM for prof exams? Okay, I did. What I have done is the list of the questions we got in the last 10 years of university exams. We got chapter wise list of questions. So I started from one chapter, complete the list, long question itna, short questions itna, and the short notes. ये वाला तो नोट्स में लिख देती थी। आई हैव रिटन ऑल द नोट्स फ्रॉम दैट, एंड दैट्स इट। प्रोफेशनल एग्जाम के लिए वो काफी है, यूनी एग्जाम के लिए आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 10 साल का कर दो सब आ जाएगा उसमें। आई थिंक दैट्स अ रैप फॉर दिस सेशन। Thank you for joining and sharing your experience and guiding us. थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, द And all the नेक्स्ट best for एग्जाम। you for your next journey, next phase in life यस, as you oh थैंक progress. यू।